We have switched over, finally have switched over to YouTube from Instagram. So all my beautiful people who are watching me on Instagram, you guys can watch me on YouTube. I am live there और आपको मिलते हैं. I will meet you guys on my Instagram. What is this with this Instagram? Why do I keep saying it? So I will meet you guys on my YouTube live right now. Okay, just trying to get more viewers on my YouTube stream, which you guys are here, and I have a lot to talk about today, to be honest. Actually, I have so much to talk about. Is everything clear for you guys or not? Just let me know if all is clear or not. I just had to, if there's anyone. Okay, top live. Okay. I don't know if we have anybody or not because I cannot see anyone live. But I'm going to start anyway because this will be a recorded session. And after the recording, I'm going to put it again on, I'm going to post this video as usual onto my channel and you guys will be able to watch it. Okay, I'm sorry about that. I need to. Sorry about that audio. Anyway, so first off, starting with what is important. Okay, we have people now, finally. Good, thank God. So far, we will start off with the due respect that I want to give to the people who have always supported me. मैं कल शाम को वापस आया. कल एक्चुअली रात को लेट नाइट में कल वापस आया बैंकॉक से. मैं बैंकॉक में कोई 5-6 दिन के लिए था. वहाँ पे फ़ाइट्स थी हमारी. 3 फाइट्स बैंकॉक में थी, 2 सिंगापुर में थी. सिंगापुर तो मैं जा नहीं सका कॉर्नर करने के लिए, इसीलिए तो मैं बैंकॉक में था. और वहाँ से जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत ही मेरा फेवरेट पैकेज, मुझे सॉरी एक्साइटमेंट की हद होती है ना, मुझे मेरा बहुत ही फेवरेट पैकेज मिला. और इसको बेसिकली ऊपर से ये पैक था, लेकिन ऑब्वियसली जब थाईलैंड कोई भी पैकेज आता है तो ये लोग बहुत शक करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कि कहीं कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं आ रहे. सो बिकॉज ऑफ दैट दे ripped my package open, they checked what's inside, and since they were satisfied कि okay there's nothing fishy in it, they actually stapled it together. So thank you so much Thai government for Thai customs for clearing everything. This beautiful package sent to me is by none other than my favorite brand ever in the world, which is Himalayan Healing Shilajeet. And these guys always send me the top-notch products that they have. इनका जो बेहतरीन किस्म का शिलाजीत होता है वो ये लोग मुझे हमेशा भेजते रहते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो है मेरी ट्रेनिंग कभी सफ़र ना हो इसकी वजह से. और आप सबको पता होगा कि शिलाजीत काफ़ी अलमशहूर चीज़ है पाकिस्तान में. उसको काफ़ी गलत चीज़ों के लिए जो है ना मशहूर समझा जाता है. लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शिलाजीत के जो फ़ायदे हैं वो मतलब इतने ज़्यादा हैं. कुछ फ़वाइद जो है ना जो मुझे याद हैं वो बताता हूँ. अदरवाइज़ ये आप गूगल पे शिलाजीत लिखेंगे आपको मिल जाएगा सारा कि ये क्यों इतना फेमस होता है. बेसिकली शिलाजीत के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीपल किस्म के मिनरल्स होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं. ठीक है जी. तो ये मिनरल्स और ये मल्टी वाइटामिन्स एक तरह से समझ लें, और ये जो आपके ढेर किस्म के जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं, या आपकी मेटाबॉलिज्म जो आपका हाजमा है उसको बेहतर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन मर्द का वो समझें एक मादा होता है जिस चीज़ की वजह से मर्द है. ठीक है. औरत के अंदर एस्ट्रोजन होता है, मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है जो आपके हार्मोन्स होते हैं. तो ये चीज़ आपके टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है. सबसे बेहतरीन और सबसे ऑर्गेनिक जो आजकल कहते हैं ना, एक टर्म चली हुई ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए. जो चीज़ लैब में तैयार नहीं होती, जो कि कुदरती जड़ी बूटी जो या कुदरती कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. तो ये है वो चीज़ है. और शिलाजीत बेसिकली वो चीज़ होती है. और शिलाजीत का इस्तेमाल जो है ना आपका
लोग यूजुअली कहते हैं कि मर्दानगी के लिए और सेक्सुअल यूज़ के लिए, तो ऑब्वियसली जब आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होगा बॉडी में तो आपका लिबिडो बेहतर हो जाएगा, जो आपका जो मर्दानगी में जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट के थ्रू, आपके खाने पीने के थ्रू, आपके रूटीन के थ्रू, आपकी नींद के थ्रू और जितना आप पानी पीते हैं उन चीज़ों के थ्रू ये सारी चीज़ें आप दोबारा रिवाइव कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आपके हार्मोन्स बेहतर हो सकते हैं। ख़वातीन के लिए जो अक्सर लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ख़वातीन के जो पीरियड्स स्किप होते हैं या पीरियड्स मिस होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप जो है ना अच्छे से हाइड्रेट करें, अच्छे से खाना खाएं, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, हार्मोनल इश्यूज़ नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रॉयल एडिशन हिमालयन हीलिंग शिलाजीत का इन्होंने मुझे भेजा है जी। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का। ये मेरा अभी सील्ड है तो मैं इसको खोलना अभी नहीं, खैर खोल देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज let's actually get started on today's thing, today's topic. This is the bottle which looks amazing, and liquid Shilajeet. You can use it with because it comes with a dropper. The top thing, it's a dropper. It's 10 to 15 drops. You can use it with anything, any liquid, any fluid. It can be your tea, it can be water, it can be anything that you like, milk, and you will have a great life in ahead of you. Anyways, साथ ही साथ इसकी analytical lab reports वगैरह everything it's tested from labs, so there is no problem. There would be no problem for you to use it basically. So आते हैं जी आज के टॉपिक के ऊपर, और this topic basically is a very important thing. This is a very in my opinion a very crucial topic, you know. But before that, we will first start with today's the week that has been going on. आज ये जो हफ्ता था, this past week was intense. This past week was crazy. I'm going to talk in English because most of this people are the things that I'm going to talk about is going to be most of, let's say, what's half screen? Somebody saying I'm going to half a screen. Wait a minute. Okay, the screen is okay, Akib, how about now? Let me know how the screen is now. So I'm going to start talking in English. Let me start again. I'm going to talk in English because whatever I'm going to talk about right now, I will come back to your comments as well. But what I'm going to talk about right now is related to Stamp, Smilla, and Jihin, and Anita, and Team Fairtex actually. So I'm going to talk in English so everyone watching can understand. People who are Stamp and Smilla's and Jihin's fans can watch and understand, not only Pakistani fans. So fight fans all around the world, hello, this is Ulumi Kareem. I am from Pakistan, but I live and train in Phuket, and I am at Fairtex Training Center. I am one of the people who helps Stamp and Smilla and for now Jihin actually for this fight, who we help them train, we help them, I personally help them with their strength and conditioning and somewhat their striking game plans and everything. So this past week, because I was in Bangkok with Jihin for her fight, cornering her for her fight. So I'll tell you what happened there. It was a crazy experience. When we went, it was raining like crazy. My bag got wet. The bag was in the trunk of the truck. It was raining heavily. It was a fabric bag. It was the bag that MFN had given to me. Shout out to MFN. I will be fighting very soon in MFN, so stay tuned to MFN as well. So, yeah, everything got wet. My clothes got wet. We reached the hotel. All our bags are dripping, and we just tossed everything into the bathroom, blow dried the hell out of every single item in my bag. And that's how the Tuesday night went. Wednesday, we had to do photo shoot and everything, so Jihin did the photo shoot. We tried to cut a bit weight so we can be on weight. Thursday was the weigh-ins day. So we started the weight cut in the morning. We knew that we won't be on weight, so we headed actually to the arena where the weigh-ins and the face-offs were. The best thing was that for us, what happened was both the girls were not on weight, and so it was a catch weight bout. But it was one hell of a
ride, and it was one hell of a trip that we had to make back and forth. We had to rush back to the hotel to make weight. Then we found out the other girl's also not on weight, so we got a little easy. But then we're like, okay, we have to reach that weight. We got back here and we told them that okay, we have almost made the weight, and there were there was so much going on, a lot of stress. I couldn't sleep properly. The camp had gone good for Jihin. I was confident she's gonna get the win. Now getting to Stamp and Smilla. Smilla suffered an arm injury and almost dislocated her right arm, which is why she was not able to throw the right hand too much in the fight, and she was capitalizing and using too much of her left hand. So she had suffered a massive injury. It was a really bad injury, and I wanted her to pull out of the fight. Basically, that's how bad it was. Moving on to Stamp. Stamp also had a very bad injury. Stamp was sick as well, and because of that sickness, Stamp's camp did not go as well as we wanted it to go. We could not push her to up to that limit where we wanted her to, but it all paid off in the end. You guys know the results, but this was let's say they both of them were 75% off their usual peaks. So they peaked 75% maximum, and the rest of the 25% was all heart and their experience. So with all of that, they went into the fights. We had Jihin lined up for Friday night. And so Jihin makes her way in. We do some. So for Jihin, the best thing was that Friday morning, around not even morning, around noon, I taught her a couple of footwork and a bit of some new techniques. She had not drilled all her fight camp. She had not drilled any of this. Excuse me, all her fight camp. On the day of the fight, I tell her two things: moving to the right, to her fighting right and fighting left. And she did exactly. She listened to every single thing, and you guys saw how amazingly she performed. So we had a Chinese teammate. He's 19-year-old, and he wanted to come watch the fight. So I told him to be in our corner, and he's like, "Sir, I'll be your little water boy." So shout out to Tenzi for being an amazing water boy. I told him specifically that when you hear the 10 seconds clap, you should have water in one hand and ice in the other hand, and you should be ready. And that kid was ready when it was 30 seconds. When the announcer said 30 seconds in the first round, I looked at Tenzi to tell him that get ready, and I saw that he was already prepared with ice in one hand and water in the other hand to get inside and help corner Jihin. Everything went well. Everything went according to the plan. The first exchange that was between Jihin and Jeneline, I was kind of scared that maybe Jihin got hit, but when Jihin started fighting back, Jihin's style, everybody knew and knows that she throws short punches, she closes the distance, and then she takes you down. But this fight, she started throwing long hands, she threw long punches. She did exactly what we worked on the day of the fight. This shows that if you actually want to change, you can change in a minute as well. So all these fighters who say, oh, my coach is this, my coach is that, he's not helping me with this, he told me this in the last week or the last 2 days or 3 days, just listen to what they're doing. They know exactly what they're doing. So do not doubt your coaches. Faith in your coach is going to get you victory. Anyway, Jihin did great. She attacked multiple triangle armbars, reverse triangle armbars. Did not work. The first round did not work. The second round did not work. The third round, even though the third round is when you're tired, when you're sweaty, and it's really difficult to pull armbars and triangles because people slip out of submissions. But Jihin pulled it off. Jihin pulled it beautifully, and she finished the fight with a triangle armbar, getting back in the win column. Let me remind you, Jihin's last fight was against Stamp, our teammate, and after that fight, she was asked by our bosses to come over to Fairtex and help Stamp prepare for her fights for the title, leading up to the title. And she's such a gem of a person that she, usually what happens is that when you fight someone, you don't want to go and train with them, you don't want to help with them, you hold some kind of a grudge against them. But Jihin did not do that. What Jihin did was, she showed great sportsman spirit. She came to Fairtex. She started training with Stamp. She started helping Stamp, and and she improved as well. So with all of that, we were all happy that okay, we have one win out of all the fights, and we started off on a very good note. Not. That's the Pakistani in me that's talking. Anyway, after that, we had Kongsuek Fairtex, who is a light bantamweight, or I think super bantamweight, Lumpinee world champion. Like, he's the Lumpinee
Muay Thai world, like he's a Muay Thai world champion of Lumpinee Stadium, which is the biggest stadium in the world. So he is the elite of the elite. So that guy was fighting. He unfortunately lost on decision, but he fought a very close fight. He lost on split decision. It was a very good fight. And as per Muay Thai rules, Muay Thai rules are very different. So he lost the fight. No problem. He's still our hero. I'm still his fan. I had taught him this up kick. I had taught Y2K an up kick for his MMA fight, and Y2K told him that this guy taught me this kick, and he used the same kick in the fight. So this is, again, bringing me back to the point that if you want to learn something and if you want to change, only you can change. People will teach you hundreds and thousands of techniques, but what you want to remember is what you will do in the fight. So every single time, trust your coaches, keep your eyes and your ears open, and listen to them and absorb as much as you can, and absorb from wherever you can. All right, Friday night was crazy. We won the fight. We went back to the hotel. No, before we went to the hotel, we went out to eat, went back to the hotel, and we had another teammate of ours who was fighting in SuperChamp LWC, and we asked him to tag along for more food. So we headed over to KFC. We had some junk food. And this is not a sponsored shout out to the KFC. They don't sponsor me, but I took your name, so you should pay me, KFC. Anyway, so after that, we headed over to we had fast food. We got back. We were laughing our behinds off till 3 a.m. in the morning. But then obviously we were tensed for Stamp and Smilla. Next morning we wake up. Now this is where I want to address all these women who talk about women do not get equal opportunities. If you watch One Championship's card, One Championship proved to the world that if you have the skill set and if you are a star, whatever sport it is, if people are watching you, people would want to watch you, they would love to watch you, and if they want to watch you, you will be put on the top. One Fight Night 14 was headlined by, I think, 4 female fights. So the main fights on this card all 4 was female fights. First was a special rule boxing bout in MMA gloves between Xiong Jingnan and our former teammate Nat Wonder Girl. Amazing fight. After that, it was the interim, I think, atomweight submission grappling championship between Jessa Khan and Danielle Kelly. And then the co-main event was Alycia from Phuket Fight Club. Aqib Awan's watching me right now, so shout out to you and your team. Aqib wanted us to go live on Instagram watching that fight, but then afterwards he said that the video was edited, so no problem, Aqib. Keep your head high. Don't cry. It is all right. So Alycia versus Smilla, in which Smilla went through Alycia like anything, and the 4th fight was between Stamp and Ham for the Atomweight MMA World Championship. And this whole event was about these women, these amazing women, these superstars, and then also Angela Lee, and then also actually Angela Lee announcing her retirement officially in front of everyone and telling everyone that the girls that are fighting for the belt won't be an interim championship. This is an actual championship fight. So to all the ladies who think that women are not being promoted, it may be the case in the West, but when you come to the East, it's a different story. So please stop preaching all this negativity to the world, especially to the Eastern world, because the Eastern world is not like the Western world, and the Eastern world is way better than the Western world. So please keep that in mind. And shout out to One Championship, shout out to Kunchatri for promoting these amazing women. And this is a true example of women empowerment. If you really want to empower women, this is how we empower women. You don't only talk about it. You don't talk the talk, you walk the walk. You don't only talk about it, you do something about it. And Chatri showed that this is how you do it if you actually want to do it. Anyway, so moving on to the fights. Nat versus Xiong Jingnan, an amazing fight. Crazy exchanges in striking. It was first time ever that in the history of combat sport that two women are boxing in MMA gloves in a cage circle. And again, this night was full of history. And then after that, there was submission grappling match, a rematch between Jessa Khan and Danielle Kelly. And Jessa Khan had
beat Danielle Kelly. I think, I'm not sure when it was, but she had beat her before. And Danielle Kelly basically took her revenge by becoming the atomweight submission grappling champion. After that was the co-main event, one of my favorite fights so far, Smilla Sandel versus Alycia. So let me remind you that Alycia had beaten Stamp Fairtex, who was fighting for the MMA championship right after in the main event, who's also a teammate of mine, and Smilla's. And she had, and so she's the atomweight queen of Muay Thai. So she wanted to move up a weight class and challenge Smilla for her strawweight championship. And you guys can watch the fight on ONE Championships page. Smilla started off real hard, even though Smilla had, like I mentioned earlier, Smilla's right arm was hurt, and she could not train with that arm. And because of that arm, she was not able to, protect herself when Alycia was throwing those left elbows. Because of that, her left guard was high, but the right hand for the guard was too low, which is why she was taking too many elbows to the face. And in the beginning, I was worried because Smilla is very young, and I thought, she might lose the fight. But then again, Smilla is young, younger as compared to Alycia, and Smilla is, I think, the world's youngest female Muay Thai world champion in any major promotion. So Smilla, from the first round, she put the pedal on the metal, or metal on the pedal, whatever the thing is. You guys can tell me in the comments. And she just went through. She went through Alycia. First round, she pressured. That was the game, very nicely. So it was a blessing in disguise that she was. Wait, what's happening? I don't know what's happening. My computer is showing some fireworks. Anyway, so Alycia showed some really good Thai clinch. She showed she threw some really great elbows. And the blessing in disguise for Smilla was that she couldn't throw her right hand, and Alycia was not expecting that left hand, the use of that left hand so much. And Smilla kept on loading that left hand, kept actually unloading that left hand to the body, ripping it to the body, tagging her on the face, and adding those right straights once in a while. And that actually hurt Alycia pretty bad. And second round, I thought it was going to be over when she actually rocked her with a left hook, and Alycia went, she did I call it a chicken dance. So she wobbled a little bit, and she hurt her there, but then she, managed to get the clinch really well. She survived that round, but the third round was all Smilla. She pushed through. Smilla, the best thing about Smilla is she knows her range, and it's really difficult to fight a person if they know their range and if they keep you in whatever range they want to keep you, if they dictate the pace, if they dictate the range, and if they dictate where the fight's going to go. So you actually have to follow their game plan, which means you're falling into their trap, and you're going to ultimately lose the fight. So an amazing fight, a beautiful masterpiece, masterclass display of striking and Muay Thai by Smilla Sandel. And still, this was her first ever title defense, and she still remains the world champion. Now for Stamp Fairtex, as I mentioned before, Stamp was sick. Stamp was really sick, and she wasn't able to train. When we would spar after 3 rounds, it would feel like she had sparred 10 rounds. So she would run out of breath. The flu was going around, and there was a lot of flu going around at Team Fairtex, and it was because of the. I'm sorry, I'm getting messages. So it was getting a lot of, a lot of people had caught flu, and because of that flu, she was not able to train properly. I was responsible for her strength and conditioning, and I saw that she could not pull it off, so we were keeping the strength and conditioning really light for Stamp, and there came a time when she was not doing strength and conditioning at all. But here is where I would like to give a huge shout out and mention our big brother, Coach Nate Waters from New Zealand. This guy actually helped us evolve our striking. He added a lot of tips and tricks of the trades in our striking, and we modified Stamp's striking from typical traditional Muay Thai to MMA striking, which is what we saw. So whatever you guys saw in there, we give the credit to Coach Nate. The movement was perfect because Stamp usually tends to move back only. Any Muay Thai fighter does that. They keep moving back. But this time we told Stamp, we guessed that
Ham wants to pressure forward, and she's going to throw the left hand a lot, and then she's going to probably want to go take Stamp down. But to our surprise, Ham wanted to strike only, and because of that, it paid its dividends to us. It was in our favor. But even if she had decided to grapple, we were ready, because Stamp put her in a submission. First round, when Stamp slipped, everybody thought that she went down. She got hurt, and I know that how strong Stamp's chin is. And this is what happens, what everybody mistakes every single time. They think, oh, we can take Stamp. They don't realize that Stamp has a granite chin, but when she hits you, she makes you question your life decisions. She makes you reconsider your career choices, and you actually think, why am I even in here with this girl? Do I really want to be in front of this girl? So everybody had underestimated what Stamp can do, and she showed what she can do, and she proved everything wrong. And I had said this in our brother Will Harris's story that he made on Stamp as well. You guys can check it out. I'll put the link in the description after I save this video. I said the same thing that in that video as well, that Stamp always surprises people. There's a lot of things that I thought Stamp won't be able to pull off, but she did pull them off, and she surprised everyone. And she did the exact same thing. 2 back-to-back body shot knockouts, winning herself the title contention spot and the title itself. Now Stamp is back. I haven't met her, and so I need to speak to her and ask her how everything went. I'll probably try to film it and have an interview for you guys with Stamp. So do comment the questions that you guys want me to ask Stamp about. Whatever the questions are, just mention them in the comment, and I'll ask her, and we'll get you the answers. So coming back to the fight camp for Stamp. That was how the camp was. The camp was, very technical. We didn't have to, we couldn't and didn't push her a lot. We kept it really nice and mellow, because she trains throughout the year. She doesn't take any days off. So we just, we were just cruising through. And so after Smilla's fight, we saw Stamp coming in. We thought she was a little nervous, and we could tell that, because obviously she was nervous. She would have been nervous because of the cardio problems. But once the fight started, I saw that Stamp was moving really well. She wasn't moving back. She was staying where the monster logo is, in one circle, and she started moving in a good direction. She started kicking she threw a lot of kicks on Ham's power arm, and that was one of our game plans that we had told her, because we knew that Ham likes to throw that straight left. And for our Orthodox versus Southpaw, it's a very good thing that you can easily target each other's power arm. So I told, I did too, and Mark did, and so did Coach Nate, that she needs to kick the left arm of Ham, so she is not able to throw that straight left. And when Stamp was throwing kicks way too many times, afterwards the doctors told Stamp that you broke her arm. So I'm not sure if that is true. We'll wait on what Ham has to say and Ham's post-fight statement on this, and if it actually is broken or not, but it was hurt real bad. So the fight went really according to the plan. When Stamp fell down and she had Ham in the armbar, that is when I knew that Stamp can finish the fight. But it was 10 seconds or something left. Stamp tried to yank on the arm to put her in the armbar to finish the armbar, and the problem, the injury, the mark that you saw on Stamp's eye was when she had Ham in the armbar, and Ham's knee and her shin actually dropped on Stamp's face. She did not hit her with anything. She fell down, and that is what accidentally hit Stamp in the face, which is what gave her a huge bump on the right side of the face, which is what people were saying that, oh, she got hit real bad. She did not get hit. If you watch really closely, Ham's slipped and fell on Stamp's face. So ultimately, it was all win-win. That was the morning, and actually closer to noon in Bangkok here. And we were really happy for the fights. We were really happy for the results. And we knew how it's going to be back home at Fairtex. But we had one more thing to do. We had one more teammate to fight at SuperChamp Lumpinee, Valentin Compagnon, my brother from France, a killer. He is an absolute machine.
You know, he did not. He does not know how to go back. He is the person who always presses forward. You hit him with shots, he's gonna keep on pressing forward. And that was the game plan, and that is exactly what he did. He wanted to get the finish. He wanted to knock him out in the second round. So how SuperChamp works basically is that you have 3-minute round and 2-minute rest. So same thing. We had Tenzi in the corner. I and Tenzi were in the corner of Valentin. The moment the bell rang, the round was over. I rushed into the ring and I told Valentin that, bro. You know, I mean, I just started rambling and I was telling him what to do. And then in the middle of it, I realized, and I said it out loud. I was like, "Oh, wait, why am I talking so fast? The round is 2 minutes. The rest time is 2 minutes. Relax, bro." And Valentin starts laughing. I started laughing. It was a good time, and we had a great time in there. And I think this is what a cornerman needs to do. If you're cornering someone, you don't need to make them feel the pressure. If they're doing bad, try to give them a bit of confidence. Try to ignite a fire in them, which will make them come back. But if you talk bad to them, the way this usually happens in Thailand, that a lot of when you get cornered, when you are in your corner, when after the round ends, you come back to your corner and you've had a bad round, 4 or 5 guys, everyone in your corner, they start yelling at you. They tell you what to do, what not to do. They will tell you kick, so you don't know who to listen to, and your mind is really foggy and you don't exactly know what to do. So what actually needs to be done is one person at a time. If you have 2 to 3 people, everybody take turns. You know, one person take charge. Tell him to relax. This is what I like to do. The moment I go inside, you guys will be able to see it in the video as well. I say, give me 3 deep breaths. First, second, third. After that, I ask them how they're feeling. And then I tell them what needs to be done. You know, in striking, in grappling, whatever exchanges you feel they need to do, you tell them. The most repetitive positions that they get in, you need to tell them that you need to fix this. And after that, if there's some other people who have something else to say, you can point at them and say, "Coach, you next." So everyone says their thing. And ultimately, you, at the very end of the when the bell rings, you just tell them that they're doing good, and you need to remind them that they've worked hard and they've worked smart. This is what I do with my athletes. This is what I do to the people, with the people that I corner. And yeah. And this was my cornerman advice and tips. So Valentin went in the second round. He started throwing elbows, knocked the guy out, got the fighter of the night bonus. And he, okay, it's because of the thumbs up, I think. So got the fighter of the night bonus, and he got the finish in a fashionable way with a knockout, and that was it. So now I'm going to switch over to Urdu. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे यकीनन आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, या तो आप सबको लग रहा होगा कि पता नहीं कब स्विच करेगा, या तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं अभी आपको दोबारा अर्ज करूँगा कि बल्कि मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे लाइव जाके आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं लाइव आ चुका हूँ और आप सब आ सकते हैं. तो whoever, by show of hands, whoever is watching me right now, you just comment whatever you can comment whatever, and I will know that you guys are watching. So till that time, I'm going to read all the comments. Somebody says मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, that is because, और वो इसलिए हो गई है क्योंकि आवाज़ चेंज नहीं हो गई, मेरा गला बैठ गया है. वो इसलिए बैठा है क्योंकि मैं 2 लोगों को कॉर्नर किया और बाकी जो फाइटें देख रहा था मेरी टीममेट्स की, स्टैम्प की और स्मिला की, तो उन फाइटों में चीख के मेरा गला बैठ गया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है. ओके, उसके बाद कह रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम पुकेट फाइट क्लब. एंड ओके, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द स्किल लेवल ऑफ some real world fighters? Are they comparable with general amateur? Obviously, of course, real world is picking up. I'll say real world is picking up. The guys are training. There's no secret sauce to becoming a good fighter. Or if you think there is a secret sauce, the secret sauce is consistent training. Training consistently is the key, and these real world kids are doing that. They are training consistently and they are keeping at it, which means they're getting better. And some of the real world athletes, in my opinion, are better strikers or better fighters than these general amateur fighters. So Asad Ali Shigri says, भाई गिलगित बल्तिस्तान के फाइटर्स को सपोर्ट करो, बहुत हार्ड फाइटर है. असद अली शिगरी, आप क्या चाहते हो मैं किस तरह सपोर्ट करूं? What do you mean support?
सपोर्ट करने का, अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग करवाएं, हम उनके जो ना हाथ पकड़ के उनके मुंह में खाना डाल के उनको जो ना फीड करें, तो ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सपोर्ट इस तरह नहीं होती। सपोर्ट इस तरह हो सकती है कि दे गेट टू अ लेवल, वो किसी ऐसे अच्छे लेवल पे आएँ, और अगर उनको कोई फ़ाइट्स चाहिए तो हम उनको फ़ाइट्स दिलवाएंगे। मैं इस मामले में सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अनकरीब इस तरह होने भी वाला है। कुछ ऐसे लड़के हैं हमारे पाकिस्तानी फ़ाइटर्स हैं, पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, जो कि बड़े प्रमोशंस में लड़ेंगे, और मैं उनके लिए वाउच कर रहा हूँ, मैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको उन प्रमोशंस में फ़ाइट मिले। तो अगर आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं, देखें जो जिस काबिल होता है, जो जितना डिज़र्व करता है उसको वही मिलता है, ठीक है। अगर हमारे एथलीट्स गिलगित बल्तिस्तान के छोड़ो, पाकिस्तान के एथलीट्स अगर कहीं भी नहीं पहुँचे, इसका मतलब वो इस टाइम डिज़र्व नहीं करते, दे नीड टू वर्क हार्ड। तो ये चीज़ें जब भूल जाएँ कि हम ये डिज़र्व करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलती है, सपोर्ट कुछ नहीं होता है, आपको ख़ुद हाथ पैर चलाने होते हैं, तभी जाके आपको कोई ना कोई मुकाम मिलता है। ओके टुमाई, वालेकुम अस्सलाम आगा। आपने फ़ाइट्स छोड़ दी हैं? नहीं भाई, हू नोज़ जैसी, मैंने फ़ाइट्स नहीं छोड़ी हैं। Okay, all the 5 people who are watching me, 6 people who are watching me, I would really appreciate you guys if you guys come on my YouTube broadcast, because I am live on YouTube right now. So I'm going to just exit from here. Okay. I'm just going to quickly make a video. All right, ladies and gentlemen, I am live on YouTube. So if you guys want to watch my YouTube discussion, I'm actually talking about the mixed martial arts scenario in Pakistan. I'm just about to start on that topic. I have covered a lot of other things, but I'm just about to start on that topic. So if you guys want to watch and contribute, स्पेशली जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप आके उस मेरी यूट्यूब के उस ब्रॉडकास्ट और लाइव ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बने, आप देखें, आप कमेंट करें, मैं उसमें काफ़ी सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। सी यू गाइस देयर। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। राइट, सो ओके, इज एनीबडी वाचिंग मी ऑन यूट्यूब राइट नाउ? एनीबडी? जस्ट कमेंट कर लें, या तो मैं खुद देख लेता हूँ। कैसे देखते हैं? एक सेकेंड। I don't know, man. I'm so new to this. I don't know what happens, how this thing works. Anyway, so let's just get started with the topic. आज जो बात करनी है, पाकिस्तान में जो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, ठीक है जी, इनके बारे में मैंने बात करनी है। पाकिस्तान के हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स का सीन, मैं बात कर रहा हूँ यूनिटी की। मैं बात कर रहा था यूनिटी से मेरा मकसद क्या है, मेरा मतलब क्या है। यूनिटी का मेरा सबसे पहले तो मेरा ये मतलब है कि हम सारे एकजुट होकर काम करें। मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी जो है, वो स्पेसिफिकली मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी, हमें आपस में मिल के काम करना है। वो काम किस तरह करना है? वो काम इस तरह करना है कि मेरे भाई, अगर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का अमल दखल है जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से आते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से आते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप आके ऐसे पोजीशंस पकड़ें जो डिसीजन मेकिंग की हैं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपने अपने जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं, आपने अपने जो स्पोर्ट हैं, उनका तो आपने दिवालिया निकाल दिया है, कबाड़ा कर चुके हैं आप। अब आप हमारे इस स्पोर्ट के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमारा ये स्पोर्ट
हमने खुद ग्रो करवाया है, हमारे इस स्पोर्ट को हमने खुद इस लेवल तक पहुंचाया है एक्सक्यूज़ मी, कि लोग हमें जानते हैं, लोग पहचानते हैं और ये स्पोर्ट फेमस हो गया और इस स्पोर्ट से पैसा आना शुरू हो गया, पैसा जनरेट होना शुरू हो गया। और मेरे ख्याल के मुताबिक इसीलिए ये लोग इस हमारे इस मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर हाथ मारना चाह रहे हैं, ताकि ये लोग भी इसी पैसे को अपने पास खींच सकें। ये पैसा जो हम कोशिश करके एथलीट्स के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एथलीट्स जो लड़ रहे हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिले, उनको अच्छे पेज मिले, फाइट्स अच्छी मिले और उनके जो जिम के ओनर्स हैं उनको एक फ़िक्स परसेंटेज मिले, उनके कोचेज़ को, उनके मैनेजर्स को फ़िक्स परसेंटेज मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एथलीट को 10% जो है ना जिम को देना पड़ता है, 10% मैनेजर को देना पड़ता है। तो आप यूनिवर्सली खैर 25% होता है ओवरऑल, कि 25% आप जो है ना अपने जिम को देते हो, जिसके अंदर मतलब 12.5% आपके मैनेजर का होता है, 12.5% आपके जिम का होता है। अगर जिम भी मैनेज कर रहा है, ऑब्वियसली आपके कोच ही आपको मैनेज कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि 25% आप उनको देते हो या 30% होता है। एवरीवन हैज़ देयर स्टैंडर्ड। अगर किसी एथलीट को $1000 मिलता है तो उसका ये मतलब है कि 300। आई एम नॉट श्योर आपको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, यहाँ तो मुझे फील हो रहा है आ रही है। नहीं भाई, आप अपना चेक करो ऑडियो। नहीं, तो अगर किसी एथलीट को $1000, $2000, $3000 मिलता है, लेट्स सपोज किसी को $5000 मिलता है, तो उस $5000 का 20% फॉर एग्जांपल 10% करके आप करते हो तो $1000 बनता है। $1000 आप अपने कोचेज़ को देते हो और अपने मैनेजर को देते हो, बिकॉज उन्होंने आपको फ़ाइट ला के दी है और दूसरा उन्होंने आपको ट्रेन किया है। कोई भी प्रो एथलीट, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी प्रोफेशनल एथलीट आज तक आप लोगों ने कोई फ़ी पे करके प्रो एथलीट नहीं बने हो। मैं किसी एक भी ऐसे प्रो एथलीट को नहीं जानता जो मंथली फ़ी पे करता हो और उसके अलावा वो फाइट भी करता हो और अपना कट भी देता हो। यहाँ पे फेटेक्स के अंदर 40% जो है ना कट लेते हैं, ठीक है। जिस रूम में मैं रह रहा हूँ इसका मुझे बिल पे करना पड़ता है, ठीक है जी। मैं यहाँ का स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बिल पे करना पड़ता है। जो गियर मुझे मिलता है एक फ़िक्स्ड साल का, एक मुझे समझे ग्लव मिलते हैं कि एक आपको बॉक्सिंग ग्लव मिला, एक पेयर हैंड रैप मिला, 2 शॉट्स मिल गए, एक शिन पैड मिले। अगर किसी तरह से वो फट गया, 1 साल का है, अगर फट गया तो आपको पूरी प्राइस दे के दोबारा उनके शॉप से ख़रीदना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो आपको 20% डिस्काउंट देंगे वो लोग। आपके कोचेज़, आपके जिम्स, आपकी टीम्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर भी जब आपको 20% 30% देने की आती है तो आपको मौत पड़ती है। सबसे पहला इशू मेरा ये है, जिस बात पर हमें यूनाइट होना है कि इफ़ यू मेक मनी एवरीवन शुड मेक मनी, क्योंकि आपकी सक्सेस में सबका हाथ है। आपकी सक्सेस में आपके टीममेट्स का सबसे बड़ी जो हाथ वो आपके कोचेज़ का, आपके टीममेट्स का, आपके मैनेजर्स का है। आप लोग अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं कि बड़ी उन्होंने सेक्रीफाइस की है, ठीक है की है, लेकिन उन बेचारों को क्या जो रोज़ आके आपके लिए एज अ डमी, एज अ बॉडी आपके सामने अपने जिस्म रगड़ते हैं, अपने जिस्म तोड़ते हैं, आपके लिए पैड पकड़ के उनके हाथ टूट जाते हैं, आपके ग्राउंड एंड पाउंड में और आपके जो है ना जितने भी रेसलिंग वगैरह है उसमें आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स डैमेज होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। उनके लिए आप क्या करते हैं? तो एक्सक्यूज़ मी, उसके लिए आप ये रिटर्न दे सकते हैं कि आप जिम को पे करें, जिम को उनका कट पे करें, और साथ ही साथ जब आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स की फ़ाइट आती है यू बी देयर फॉर देम। आप उन ट्रेनिंग पार्टनर्स की फ़ाइट्स के लिए आप वहाँ प्रेजेंट हों। ये बात मैंने एक्सपीरियंस भी की है, मैंने देखा भी है, जो कि लैकिंग है। सबसे पहली बेसिक चीज़ ये यूनिटी की होती है। दूसरी बात, जिस बात से ये बात निकली कि जो एक्चुअली मेन बात है कि वाई डू वी हैव, स्पेशली ख़ास तौर पे अगर हम देखा जाए तो हमारे वुशु के जो हमारे भाई हैं, यही आके हर एक चीज़ में इन्होंने टेक ओवर किया है। मैं कुछ थोड़ा डिगिंग कर रहा था, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था इसके ऊपर, और मुझे वुशु के 2 जो है ना ऐसे हजरात मिले। मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। एक हैं जी ग्रैंड मास्टर कुंग-फू नेशनल चैम्पियन, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्शल आर्ट्स। ये हमारे एक जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके बाद एक और जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका 25 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट मार्शल आर्ट्स। फॉर्मर आर्मी टीम कोच, ज़ाहिर है मैं नहीं चाहता कि डाला कि मुझे उठा ले। ब्लैक बेल्ट इन कराटे, ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो, ब्लैक बेल्ट इन वुशु ब्लैक बेल्ट इन वो वियतनाम, शाओलिन कुंग-फू, यूनाइटेड नेशन, पता नहीं क्या क्या। तो 25-30 चीज़ें इन्होंने की हुई हैं।
मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर उनके इवेंट्स का ना रेफरिंग जजिंग का कोर्स कुछ भी नहीं किया, और ये लोग आके फ़लानी फ़ेडरेशन बस्तानी फ़ेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी तो वो सेक्रेटरी तो फलाना क्या नाम है फाइनेंशियल ये तो ये डायरेक्टर तो वो डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। माई बिगेस्ट क्वेश्चन टू द ओनर्स ऑफ दिस प्रमोशंस इज़, आप सबको शायद पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि आपसे मेरी ये गुजारिश है सर कि मिक्स मार्शल आर्ट्स से जो रिलेटेड लोग हैं, किसी अभी एक दोस्त ने पूछा था कि रियल वर्ल्ड के एथलीट्स के बारे में क्या ख्याल है। भाई रियल वर्ल्ड के एथलीट्स को आप छोड़ दो, अगर आप सच में चाहते हो आपका शो सबसे बेस्ट हो, नंबर 1 हो, तो आप रियल वर्ल्ड के जो लड़के जो चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं इनको बोलो भाई ये काम करो, हमारा ये शो भी आप ऑर्गेनाइज़ करो। यहाँ पे सुपर चैम्प और वन चैम्पियनशिप ने फेटेक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हमारा वन लुम्पिनी और सुपर चैम्प जो है ना रन करो लुम्पिनी के साथ। तो इस टाइम पे फेटेक्स जो है 3 प्रमोशंस लुम्पिनी के अंदर रन करता है। रात को फ्राइडे नाइट को जो वन लुम्पिनी होता है, सैटरडे मॉर्निंग फेटेक्स फाइट होता है, फेटेक्स प्रमोशन फेटेक्स फाइट होता है। उसके बाद सैटरडे की शाम को, उसी सैटरडे की शाम को LWC सुपर चैम्प होता है। मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर एक ही वेन्यू में 3 शोज़ करते हैं। तो अगर एक जो कंपनी है वो 12 घंटे के अंदर 3 शोज़ करती है, जो तीनों के तीनों यहाँ के नेशनल टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, और उनकी रैंकिंग और रेटिंग उस चैनल में जो है टॉप 10 में है, तीनों की लोग वो शोज़ देखते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में एक शो करते हुए वो भी 2 महीने में 3 महीने में क्या मौत पड़ती है कि हम उसको अच्छे से नहीं करते। अगर हम NFT और IFT की बात करते हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा होने वाला हैपनिंग शो है, ठीक है, तो मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न NFT और IFT के साथ ये है कि मैंने जहाँ तक मैंने सुना है वो ये सुना है कि अगर आप NFT में लड़ेंगे तो आप दूसरा जो फेडरेशन है उसके अंदर आप कम्पीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यही चीज़ हमारे वुशु के अंदर हुई थी। आप आर्मी की फेडरेशन में हैं, आप पता नहीं किसकी दूसरे की फेडरेशन में हैं, तो आप उसमें नहीं लड़ सकते, आप इसमें नहीं लड़ सकते। आप इसमें लड़ेंगे तो आप वहाँ से बैन हैं, आप उधर में लड़ेंगे तो आप यहाँ से बैन हैं, और आप दोनों में से किसी एक में लड़ेंगे तो एक ही ऐसी प्रमोशन है, वो नहीं है बंगाली समोसे वाला, उसके साथ भी एक बंगाली समोसे वाला, असली मामू बर्गर और नकली मामू बर्गर, असली गराटो जलेबी। ये हमारी असली गराटो जलेबी वाली जो ना हालत हुई है कि हम लोग कह रहे हैं असली फेडरेशन हमें, असली फेडरेशन हमें। असली नकली फेडरेशन क्या होता है भाई? दोनों अगर आप लोग आपस में मिल के काम करें। पाक MMA फेड के नाम से NFT और IFT के जो हमारे बाबर राजा साहब हैं, अब वो जो है अपने फेडरेशन चला रहे हैं। बाबर राजा की फेडरेशन इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब। सारे पाकिस्तानी एथलीट्स को खपा रहे हैं वो लोग। किस तरह से IFT के अंदर आपके प्रो फाइटर्स जो है ना वो लड़ रहे हैं, NFT के अंदर सारे एमेचर्स लड़ रहे हैं। उनको पता है कि हमारा ग्रैंड प्राइज़ जो है बेल्ट के साथ साथ, चैम्पियनशिप बेल्ट के साथ साथ 5 लाख रुपए है, विच इज़ $500,000 रुपीज़। दुनिया में किसी भी प्रमोशन में किसी भी एमेचर फाइटर को $1 नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जीतने का $2,000 मिल रहा है, तकरीबन $2,500 मिल रहा है। तो आप मुझे ये बात बताएं, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के एमेचर फाइटर्स ख़राब हो रहे हैं इस बात पे कि आप अगर दूसरे किसी इवेंट्स में लड़वाएं, भाई NFT और IFT में तो हमें इतने पैसे मिलते हैं, आप हमें क्यों नहीं, आपको हमें पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग। मैंने ख़ुद बशीर भाई की कॉल पे सुबह कॉल आई कि यार शाम हमारे पास कोई फ़ाइटर नहीं है, वक़ार से फ़ाइट करनी है, तो हमें कोई इंटरेस्टिंग फ़ाइट चाहिए, चलो मैं उलूमी को भेज रहा हूँ। सुबह मैंने यूनिवर्सिटी मिस करके ट्रेन पकड़ी अपने दोस्तों के साथ, मैं पहुँचा हूँ जी लाहौर। वक़ार से मैंने फ़ाइट की जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू फाइट। अभी आपको इतनी फ़ाइट्स मिल रही हैं और आप कहते हैं आपको पैसे चाहिए। मोहम्मद मुकायव वॉज 21-0 इन IMMAF, ठीक है। IMMAF का लास्ट जब बोला था मेरा ख्याल 21-0 तो 25-0 था। उसने $1 नहीं लिया IMMAF से, किसी एमेचर प्रमोशन से $1 नहीं लिया। 25 एमेचर फाइटें की, 2 टाइम्स मेरे ख्याल से वो या 3 टाइम्स IMMAF का गोल्ड मेडलिस्ट रहा, वर्ल्ड चैम्पियन अपने डिवीज़न का सबको डोमिनेट किया, और उसने $1 नहीं मांगा, सीधा UFC पहुंचा। और हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स कहते हैं मैं UFC का चैम्पियन बनूंगा, मुझे एमेचर में भी पैसे दो, मुझे ये भी दो। नखरे हमारे ख़त्म होते नहीं हैं, ठीक है। बातें कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। हमारी असलियत ये है, हमारे एथलीट्स की इस टाइम पे असलियत ये है कि कोई हमारे एथलीट्स को साइन करने को तैयार नहीं है, और जो तैयार है उनसे आपको ढेर सारे पैसे चाहिए। सो सबसे पहले तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लें। और अगर बाबर राजा इज़ बीइंग काइंड इनफ कि वो आपको $5 लाख अपॉन विनिंग
आपको जो है ना एक एमेच्योर फाइट जीतने, टूर्नामेंट जीतने पे आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपना नखरा जो है ना दबाना चाहिए, ईगो को नीचे लेके आए आप, ठीक है। इतना पैसा शायद मैंने आज तक अपने प्रो करियर में भी नहीं कमाया एक फ़ाइट से, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम बात करते हैं अब बाबा राजा साहब की फेडरेशन का। अब मैंने सुना कि अभी कुछ वीडियोज़ जो है ना मंजर यहाँ पे आ रही हैं, लोग मुझे टैग कर रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसकी वजह से लोग कह रहे हैं आप इस बारे में बात करें, तो ये भी हाईलाइट करें। NFT के PK के अंदर हाथापाई हो रही है, लड़ना का इशू नहीं है, ऑब्वियसली इवेंट्स के अंदर होता है, वो फाइटर्स के मसले होते हैं, लेकिन मेरे सुनने में ये आया है 59 किलो के फाइटर को 56 किलो में लड़वाएं जी। नहीं माना तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, आप मेरी बात कैसे नहीं मान सकते हैं? क्लाशिंकोव निकाल दी, खुदा के वास्ते यार, खुदा के बंदे, ये भी कोई करने वाली बात है? ठीक है, इट्स एन एमेच्योर फाइट। अगर आप 59 किलो के हो 61 में लड़वाओ, 59 और 56 में 3 किलो का फ़र्क है, 59 और 61 में 2 किलो का फ़र्क है, तो इतना कॉमन सेंस और इतना जो है ना 2+2 तो आप भी कर सकते हो, इतना अक्ल तो आपको भी है, थोड़ा बहुत जो है ना आप दिमाग इस्तेमाल करें, अपने फाइटर्स को सबसे पहले प्रोफेशनल बनवाएं। प्रोफेशनल होने चाहिए आप लोग कि आप लोगों को ये चाहिए कि आप हमेशा ऑन वेट रहे। मैंने सुना IFT में भी काफ़ी हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स से भी, ईरानी एथलीट्स भी, क्या ये मेरा वेट है, तुम्हें लड़वाना है तो लड़ो। ऐसे फाइटर्स को बोलो गेट द हेल आ रही है। जब ऐसे फाइटर्स को आप बोलेंगे यहाँ से निकलो, तब फाइटर्स सीरियस होंगे। आप वेट मिस करेंगे, आपको 22, आप अगर वेट मिस करेंगे आपको 20 to 30% फाइट पर कट होता है, पूरी दुनिया भर में ये रूल है, ठीक है। 1 किलो से कम अगर आपका वेट ऊपर है तो 20% आपका वेट फाइट पर कट होगा, आपके पैसे कटेंगे। 1 किलो से ज़्यादा है आपका वेट, फाइट वेट डिसाइडेड से 1 किलो ज़्यादा है तो आपका 30% पैसे कटेंगे। मगर मतलब अगर आपको $1000 मिल रहा था तो अभी आपको 700 मिलेगा। और अगर टैक्स काट के हुआ तो सबसे पहले 10% टैक्स कटता है, तो 900 हो गया। उस 900 में से आपका जो है ना $300 कटेगा, तो आपको $600 आपके 1000 प्रॉमिस हुआ था, 600 आपको जो है ना पकड़ाएंगे। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत जो है ना ज़्यादा काम करना होगा। तो वापस आते हैं जी इस टॉपिक के ऊपर कि NFT का जो मसला मसाइल हुआ, तो ये जो वेट का इशू था, चलें मान लिया कि उनको आप द ओनली थिंग दैट यू कैन, चलो मान लिया यार, चलो कि नहीं लड़वाया, आपकी बात नहीं सुनी, आप नाराज़ हो गए, क्लाशिंकोव निकालना, बंदूक निकालना कहाँ की तुक बनती है कि एक बंदे को फाइट करने बंदूक निकाल दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरा कंसर्न बनता है कि जजिंग और रेफरिंग आप करवा रहे हैं वुशु के उनसे। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों को देखा, कुछ इवेंट्स हो रहे थे, मैं इतना बताऊँ, कराची के कुछ एक इवेंट था कराची का, उस इवेंट के अंदर मैंने देखा कि ऐसे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, मिक्स मार्शल आर्ट्स का इवेंट था, ऐसे ऑफिशियल्स बैठे हुए थे जिनको MMA का दूर दूर तक नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के रूल्स क्या हैं और वो होता क्या है, हाउ इज़ इट जज्ड, हाउ व्हाट द रेफरी प्रोसीजर इज़। उनको मेरे ख्याल के मुताबिक, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हमें जो ना हर एक अच्छी चीज़ को, हमें हर एक चीज़ को बोस्ट करने का शौक़ होता है कि यार देखो स्टेटस है, तो मैंने उनको कोई ऐसा पोस्ट नहीं देखा कि उनको कहीं रेफरिंग या जजिंग के कोर्सेज़ करवा रहे हो या स्कोरिंग का कोर्स करवा रहे हो या किसी भी तरीके से उनको कोई सेमिनार दे रहे हो ताकि उनको आइडिया हो जाए कि यार मिक्स मार्शल आर्ट्स ऐसे होता है, और उनको आपने जज करने में, मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट जज करने के लिए बिठा दिया है, ठीक हो गया। मेरा गला इधर चीख के फट चुका है और मैं और अपना गला फाड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मुझे क्या पड़ी है, मैं चुपचाप तो यहाँ पे लोगों को ट्रेन करूँ, ठीक है। स्टैम्प का मैं जो है ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ, स्मिला का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ, ठीक हो गया जी। मार के बेलाडो जो अभी फाइट करने वाला है अपकमिंग, ठीक है, अनीता उसकी फ़ाइट आने वाली, ONE लुम्पिनी और ONE चैम्पियनशिप, इनके सुपर स्टार्स का मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ। मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या तुक पड़ी है कि मैं पाकिस्तान के हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स की कम्युनिटी के लिए गला फाड़ के मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपका भी ज़रा फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ खुदारा आप मेरी इस बात को सुनें, इस बात को समझें। अगर आप चाहते हैं ये स्पोर्ट ग्रो करे तो आपको और हम सबको एक ही पेज पे आना पड़ेगा। सारी फेडरेशंस जो लेफ़्ट राइट हुई हैं, मैं खुला आज एक ऑफ़र करता हूँ। पाक MMA फेडरेशन जो उमर भाई रन कर रहे हैं, और दूसरी हमारी जो फेडरेशन है पाक MMA फेड के नाम से, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, जो कि बाबा राजा रन कर रहे हैं। दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे हैं। एक साहब बाबा राजा साहब जो हैं वो नेशनल लेवल्स के एथलीट्स को ग्रूम कर रहे हैं और इंटरनेशनल फाइटर्स को लेके आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एमेचर्स हैं जो NFT में कम्पीट कर रहे हैं
उनको IMF में कौन लेके जा रहा है, उनको एमेचर वर्ल्ड कप में वर्ल्ड स्टेज पे कौन लेके जा रहा है, जो कि दूसरी प्रमोशन है, विच इज़ उमर अहमद फ्रॉम पाक MMA फेडरेशन, backed by and supported by a lot of big government entities and a lot of power. The biggest power is Green Hill Sport, जो कि आपके ओलंपिक्स को, आपके क्या नाम है इसका, IMMAF को और आपके ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन को, इन तीनों को स्पॉन्सर करता है। ब्रेव में वो स्पॉन्सर, आपका एक फाइटर ब्रेव जाएगा, ब्रेव से UFC जाना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद मुखायब, अगेन जॉनी वॉकर, मोहम्मद मुखायब, खमजत शिमायव, अमीर अलबाजी, होजे शोटी टोरेज, बड़ी एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखना चाहें, अमीर अल कैसी, बहुत एग्जांपल्स हैं जो ब्रेव इज़ अ गेट वे टू द UFC। अगर आप चाहते हो UFC में फ़ाइट करना है तो आपको ब्रेव में फ़ाइट करनी होगी, अगर आपको ब्रेव CF में फ़ाइट करना है तो आपको IMMAF में फ़ाइट करना होगा, और आपको IMMAF में फ़ाइट करना है तो आपको INFT में फ़ाइट करना होगा। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ये एक चेन है, इस चेन की एक कड़ी इधर है, एक कड़ी इधर है, हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी की यूनिटी की। और अगर आप चाहते हैं कि यूनिटी बरकरार रहे और मिक्स मार्शल आर्ट्स ग्रो करे, तो सबसे पहला कदम हमें ये उठाना पड़ेगा कि हमारे जो हज़रात हैं, ग्रैंड मास्टर्स हज़रात, फलाना मास्टर, तो बस्ताना मास्टर, तो हमारे निंजा टर्टल, तो हमारे मास्टर शिफू, और पता नहीं क्या अजीब व गरीब नाम है, कुंगफू पैंडा, तो पता नहीं क्या क्या ख़ुद को बोलते हैं। खुदा का वास्ता है, इनको आप साइड पे कर दें। इनको आपको चाहिए, आपको अगर इनको पोजीशंस देनी है तो इनको ऐसे पोजीशंस दें जहाँ पे इनकी डिसीजन मेकिंग की ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चीज़ में इनको रख लें, लेकिन काम उन लोगों से जो लें जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अपने ओरिजिनल या अपने मंजे हुए लोग हैं, जिनको मिक्स मार्शल आर्ट्स का पता है, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी के लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्पोर्ट प्रोग्रेस करे, यहाँ तक हम लोग किसी की हेल्प पे नहीं आए, एवरीथिंग वाज सेल्फ सपोर्टेड, ना गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना किसी ने सपोर्ट किया। फेडरेशन बना के गवर्नमेंट से फंड खाना, ये दूसरा स्पोर्ट्स का काम था। मिक्स मार्शल आर्ट्स के लोग ऐसे नहीं हैं, हम में इतना शऊर है, हम में इतनी अक्ल है कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये सारा गंद वाला हो। तो इस बात पे हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि हम अपने इवेंट्स खुद रन करते हैं, हम अपने स्पॉन्सर्स खुद लेके आते हैं, अपने एथलीट्स को हम खुद ट्रेन करते हैं, खुद ग्रूम करते हैं, और जिनके साथ हमारी फाइटें होती हैं वो आउटसाइड द केज हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ हमारा खाना पीना उठना बैठना होता है, केज के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, और इसी से हमारा लेवल बढ़ता है। इसी तरह हम लोग अब इस्माइल की एग्जांपल ले लें, वो जो है ना वन लुम्पिनी में लड़ा, उसके अलावा जो है ना आप मल्टीपल, और हमारे अहमद मुश्तबा हैं, वो वन चैम्पियनशिप में लड़ रहा है, महमोश है जो ब्रेव में लड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और मैं हूँ जो यहाँ पे MFN में मैंने फ़ाइट किए, और लड़के हमारे हैं जो आ रहे हैं, जो अप एंड कमिंग हैं, राइट। तो ऑल दीज पीपल, आकिब अवान है जो वन लुम्पिनी में लड़ा, जो कि पॉकेट फाइट क्लब के साथ साइन हो गया, राइट। तो ये सारे वो लोग हैं जो हमारे अपने होम ग्रोन लड़के हैं। और होम ग्रोन किस तरह, हमने किसी की सपोर्ट नहीं ली, कहीं से कुछ भी नहीं किया, नोबडी सपोर्टेड अस, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, किसी ने हमें एक ढेला नहीं दिया, हमने खुद पहले नाम कमाया। जब हमने विन किया, मीडिया वालों के पीछे गए कि भाई देखो हम लोग जीत के आए, फलाने को हरा के आए, इंडिया को हरा के आए, बस्ताने को हरा के आए, इधर से मेडल जीत के आए, उधर से वो टूर्नामेंट जीत के आए, तब जाके मीडिया ने हमें रिकग्नाइज़ किया। जब मीडिया ने रिकग्नाइज़ किया तब स्पॉन्सर्स ने पैसा देना शुरू किया, जब स्पॉन्सर्स ने पैसा देना शुरू किया तो स्पोर्ट में पैसा आना शुरू, जैसे ही स्पोर्ट में पैसा आना शुरू हो गया, लेफ़्ट राइट जितने भी मार्शल आर्ट्स जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम्युनिटी, मार्शल आर्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो आके उन्होंने जो है ना इसके अंदर दोबारा एक लीच बन के चिपक के खून चूसना शुरू किया। शुरुआत हो चुकी है इस खून चूसने की, किस तरह से कि ये आप लड़ाइयाँ देख रहे हैं, दंगे फसाद देख रहे हैं। सिर्फ एक इवेंट में लड़ाई हुई थी, बल्कि 2 इवेंट्स में, मेरे सामने आई विटनेस जो हमें 2 इवेंट्स में। पहला था PFC के अंदर, जिसमें हैदर फरमान वर्सेस जमील की फ़ाइट हुई थी, और वो एक ग्रज मैच था क्योंकि जमील वॉज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू TFF के फाइटर्स, और हैदर फरमान वाज लाइक आई विल मेक यू पे फॉर इट। और जब ये हुआ तो क्या नाम है, जमील ने जब बाहर गालियाँ दी तो उधर बाहर से जो है ना हैदर ने अंदर जो है ना फाइट में उसको जो है ना बोलना शुरू किया, तो जमील क्विट एंड ऑफ दैट हैपेंड। और बाहर से जो हमारे टीममेट्स थे उन्होंने जो है ना जो एक रोला डाल दिया, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी, हाथापाई नहीं हुई थी। दूसरी लड़ाई मेरे सामने जो हुई थी ARY वॉरियर्स 1 में हुई थी, विच वॉज ऑल्सो अ ग्रज मैच बिटवीन हैदर अली एंड कोच रिजवान और अगजई। उनमें आपस का उनका पर्सनल इशू था। फ़ाइट ख़त्म होने की वजह से एक दूसरे को जो है ना वो उंगलियां और वो सारी चीज़ें हो रही थी, गालियाँ हो रही थी, जिसको मैंने खुद अंदर जाकर रोका, किसी को मारा मारी नहीं हुई। इस जो इवेंट की वीडियोज़ हैं, दिस वाज द 3rd इवेंट, इसकी मैंने वीडियो देखी। इसमें सिक्योरिटी वाले जो बेचारे ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं रोकने के लिए,
गालियाँ दे रहे हैं ऊँची ऊँची आवाज़ में, कुर्सियाँ फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा भी ताइक्वांडो, वुशु या बाकी जितने भी कराटे, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर हम लोग मेडल स्कोर करते, जिस चीज़ में हम लोग माना जाता, या गोल्फ, सॉरी गोल्फ कह रहा हूँ, अपना स्क्वाश, पता नहीं गोल्फ कहाँ से आ गया, सॉरी स्क्वाश क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। ऑल द स्पोर्ट्स आर डाइंग। अभी भी ताइक्वांडो में मेडल्स आ रहे हैं, वॉलीबॉल में मेडल्स आ रहे हैं, फुटबॉल में जो है ना लोग देख रहे हैं। 2.1 मिलियन जो है ना ख़वातीन के फ़ुटबॉल को पाकिस्तानियों ने व्यूज़ आए, 2.1 मिलियन व्यूज़ आए। अब जब स्पोर्ट ग्रो होना शुरू हो गए हैं तो अभी जो है ना बाकी लोग आ रहे हैं इसके अंदर उंगली करने के लिए कि भाई अभी हम फ़ायदा उठाएं। आपका ज़माना चला गया, आप अपने टाइम पे जो करना था आप कर चुके हैं। खुदा का वास्ता है, खुदा रहा आप हमें अभी करने दें, क्योंकि अप एंड कमिंग जो हमारी यूथ है, जो ये जनरेशन है, दीज गाइज नो हाउ टू वर्क। और इन लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बार बार मेरा माइक क्लिक कर रहा है तो मैं ज़रा आवाज़ को ज़रा बराबर कर लूँ जी, 1 मिनट। ओके आई थिंक नो, ओके जी, आई थिंक अब बेहतर हो गया। हाँ जी, बहुत बेहतर हो गया, अब आवाज़ क्लिक नहीं करेगी। खैर, तो ये सारी बातें, इसके अलावा और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी, जो मैं ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की मैंने बात की थी, उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे जो है ना अपनी स्टोरीज़ बताई। उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने 2018 में जब नेशनल्स खेलने हमारे एक एथलीट कोयटा जा रहे थे, तो उन्होंने उस एथलीट की बहन को बोला कि अगर आपको नेशनल्स खेलना है तो 30,000 रुपये आप मुझे देंगे। और 2015 में साउथ एशिया के लिए जब वो जो एथलीट जिन्होंने मुझे मैसेज किया वो सिलेक्ट हुए, तो किसी का उन्होंने नाम लिया है तारिक अली, कह रहे हैं उन्होंने मुझसे 80,000 रुपये मांगे। और कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट आया था तो पैसे मांगे जाते थे, तो उन्होंने बोला कि आप हमें पैसे देंगे वरना आप नहीं जाएंगे। और ये फेडरेशंस गवर्नमेंट से फंडेड होती हैं। अच्छा, अवले हैदर नवाज बुक कर मैंने भी अशोना ज़रूर चगान चवा। खैर, मूविंग ऑन, तो फेडरेशंस गवर्नमेंट से फ़ंड लेती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फेडरेशंस को, जो एक्नॉलेज्ड या रजिस्टर्ड फेडरेशंस होते हैं, उनको गवर्नमेंट फ़ंड अलॉट करती है। मतलब आपके एथलीट्स कहीं जा रहे हैं तो वो अपने पैसे नहीं लगाएंगे, वो गवर्नमेंट फ़ंड पे जाएंगे। आपके एथलीट्स का कैंप होगा, उनकी ट्रेनिंग, उनका न्यूट्रिशन, उनका अकोमोडेशन, एवरीथिंग आपका गवर्नमेंट फंडेड होता है। इसीलिए जो भी ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट होते हैं वो स्पोर्ट जो है गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट होते हैं। और जो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट होते हैं वो जो स्पोर्ट होते हैं उनका ये सिस्टम होता है भाई कि गवर्नमेंट इज़ सपोज टू पे देम। इसीलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स को अभी तक गवर्नमेंट कोई सरपरस्ती नहीं दे सकता, और अल्लाह का शुक्र है नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग ओलंपिक्स में अभी तक रिकग्नाइज नहीं हैं। हमारी फेडरेशंस प्राइवेट फेडरेशंस हैं, और जो भी फेडरेशंस में कोशिश करके फेडरेशन बना के गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट करके पैसे निकालना चाह रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि भाई खुदा का वास्ता है, ये हरकतें आप दूसरे स्पोर्ट्स के साथ की हैं, दूसरे मार्शल आर्ट्स के साथ की हैं, हमारे साथ मत करें। मूविंग ऑन। अच्छा, तो कोयटा में जब ये कि भाई कह रहे हैं कि उन्होंने जब अपना क्लब खोलना चाहा तो कह रहे थे कि क्लब ओपन नहीं कर सकते, क्लब ओपन अगर किया तो आपको हाफ प्रॉफिट मुझे देना होगा। ये मेरे पास जो है ना मैसेज पड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं नेशनल कैंप कराची में लगता था, तो TAD है 5,30,000 टोटल सब का। वो जो तारिक साहब थे उन्होंने लिया। यहाँ तक कि जो दूध मिलता था, मिल्क पैक के जो पैकेट्स थे, वो कैंप से निकाल के आयशा मंजिल पर सेल करते थे। ये हमारे हालात हैं भाई। कहते हैं फिर जब इन हरकतों की वजह से उन्होंने ये छोड़ दिया तो आज तक वो ये साहब नेशनल खेलने से कहना, आई नो दिस गाय, ही इज़ इनके साथ मैंने ट्रेन किया है। जब ये किसी इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहे थे, मेरे ख्याल से 16-17 में मैंने एक साथ ट्रेन किया था, एंड ही इज़ अ बीस्ट। ठीक है, ये अगर इनके साथ ये हो गया है तो फिर आप सोचें कि ये मतलब पाकिस्तान का एलीट लेवल एथलीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब नेशनल नहीं खेला और सिंध में जिजित्सु के ट्रायल भी नहीं लेता, सारे अपने क्लब के लड़के थे। हाँ, सारे अपने क्लब के, उन्होंने अपना क्लब खोला था, वो जो उनका नाम लिया, और उन्हें अपने क्लब के लड़कों को सिलेक्ट करके ले गए। ट्रायल्स वायल्स कुछ नहीं हुए।
तो PJJF से जो है ना, पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन वालों, अच्छा जी, अच्छा, पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन की भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ थी जिनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था, और जिसकी वजह से उनको हमारे एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। मतलब ये सियासत नहीं है तो क्या है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो वीडियो थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ जो हमारे पेशावर में जो KPK जो ट्रायल्स हुए थे NFT के, उसमें जो मसला हुआ था। सो पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप, ठीक है, लोग बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई मसले हैं, ठीक है। अच्छा, पेशावर NFT ट्रायल में कुंगफू वालों ने आपस में लड़ाई की, मैनेजमेंट के साथ लड़ पड़े, ठीक है, यही लोग मैनेजमेंट में थे और ये उनसे लड़ पड़े। उसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन लोगों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, लेकिन मेरा NFT के से कोई इशू नहीं है। मेरा इशू IFT से नहीं है, मेरा इशू उनकी फेडरेशन से नहीं है, मेरा इशू उमर अहमद की जो फेडरेशन है उससे नहीं है। ऐसे किसी ने कमेंट किया है, भाईजान ताइक्वांडो ज्वाइन करो कि जित्सु। भाई आप MMA ज्वाइन करो ना, ताइक्वांडो ना जित्सु। खैर, तो ये सारा जो सीन हुआ, इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर दोनों फेडरेशन आपस में मिल के काम करें, ठीक है, मेरे बोलने पे, मेरे सिफारिश करने पे उमर अहमद भाई और आबिद जहांगीर भाई जो ग्रीन हिल के CEO हैं, ये दोनों गए IFT 2 जो हुआ था पाकिस्तान वर्सेस ईरान, उस पर वहाँ पे दे हैड अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, और वो वापस आए। कहते हैं हम लोग बस 15-20 मिनट बैठे या थोड़ी देर बैठ के वापस आ गए। मुझे उस चीज़ से इशू नहीं है, मुझे इशू इस चीज़ से है कि आपस में अगर मिल बैठ के काम नहीं करेंगे तो वी विल फॉल अपार्ट। द सोल्यूशन टू दिस इज़, जो कि अगेन मैं खुला सोल्यूशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान में जो एथलीट्स, एमेचर एथलीट्स को जो ग्रूम कर रहे हैं, NFT करें, बाबर राजा इसको स्पीयर हेड करें, जो आप काम कर रहे हैं, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग बट हैव अ डिफरेंट टीम। दिस इज़ माई डायरेक्ट मैसेज टू बाबर भाई, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, यू आर चेंजिंग ऑल द एथलीट्स लाइव्स, right? You have such a positive contribution towards the mixed martial arts community of Pakistan. What I want from you is, आप इन्हीं लड़कों को, इन्हीं बच्चों को NFT का प्लेटफॉर्म दें। Whoever wins national fighting tournament, whoever becomes in their respective divisions, जो भी अपने डिवीजन का चैम्पियन बनता है, वो आप जो है ना join hands with उमर भाई, उमर भाई will get them to IMMAF, ठीक है। मतलब ये है कि आपके बनाए हुए पेड़े का या आपके बनाए हुए चपाती को उमर भाई तेल में डाल के फ्राई करके बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट हमेशा फाइटर को मिलता है, हमेशा क्रेडिट फाइटर को मिलता है कि क्या फाइटर है। कभी किसी ने नहीं कहा यार क्या फेडरेशन है इस तरह का फाइटर निकाला, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो अल्लाह का वास्ता है इन चीज़ों के पीछे मत पड़ें, इग्नोर ऑल ऑफ दिस, इस चीज़ से आगे बढ़ें। यू गाइज आर वे बेटर एंड बिगर देन दिस एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, ठीक है जी। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों के जो काम देख के, सो यू गाइज नीड टू जॉइन हैंड्स, आप लोग मिल के काम करें। क्या बुरा है अगर IFT के जो एथलीट्स हैं वो एक जगह पे, NFT नहीं IFT के एथलीट्स एक जगह पे ट्रेन करें, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, लाहौर के अंदर चलें ब्रेव जिम में, वो आके उमर भाई के पास ट्रेन किया, उनके पास केज है, ताकि उनको पता चले भाई हमने केज में लड़ना है, केज वर्क किस तरह होता है, रिंग में फाइट है, IMF में हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, हम NFT में या तो IFT में हम जीते हैं या तो NFT के चैम्पियंस आते हैं इधर जो है ना केज के अंदर ट्रेन करते हैं, वहाँ पे किस तरह होगा। IFT का जो इनसाइड आउट जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी उनका एक सिस्टम है, वो सब उमर भाई को पता है कैसे चलता है, उनके कनेक्शंस हैं। आप अपने कनेक्शंस पाकिस्तान में यूज़ करें, एथलीट्स को ग्रूम करें, एक क्रीम टॉप ऑफ द लाइन लेके आएँ, उनको आप उमर भाई के पास टॉस कर दें, उमर भाई अपने कनेक्शंस को यूज़ करेंगे, उनको वर्ल्ड का जो टॉप ऑफ द लाइन है उस कैटेगरी में ले जाके खड़ा करेंगे। तो योर वर्क प्लस उमर भाई's वर्क is going to make the sport in Pakistan grow, the athletes get better
and Pakistani athletes represent us in ONE Championship, in Bellator, in PFL, in the UFC, wherever you guys want to perform. इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा. मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इन लोगों से डायरेक्ट मेरी इनसे बात हो जाए. तो मेरा जो एपिसोड होगा, जो मेरा अनफिल्टर्ड गेस्ट्स का एपिसोड होता है, जो मैं आई टॉक टू पीपल, सो कॉल्ड इंटरव्यू पीपल. I will speak. I will try and speak to Babar Raja Bhai. I will try and speak to Abid Jahangir Bhai. I will try and speak to Umar Ahmed Bhai, and I will pitch the idea to them. I will record whatever conversations I have with them. I will interview them, and I will post it on YouTube, and I will show you guys what they have to say. And I really hope कि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ें. I really hope कि हम इन तफर्रुकों से और ये नहीं मैं जो है ना ज़्यादा मैंने किया है इन चीज़ों से आगे बढ़ें. और ये जो लोग हमारे इस स्पोर्ट को लीच बन के या दीमक बन के अंदर से खोखला करने की कोशिश करें, उन सब से दूर रहें और इससे आगे बढ़ें. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट इन द चैट राइट नाउ, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस यू गाइज कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो. आई डोंट नो 1 घंटे की वीडियो आप लोग देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू write down in the comments. अगर आप यहाँ तक पहुँचे, write down in the comments what you think about it. Write down in the comments and let me know कि आपको और किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ, और किस का मैं इंटरव्यू करूँ, किससे मैं किस बारे में बात करूँ. जो भी आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन करें और मुझे बता दें साथ साथ, ताकि मैं आपके लिए वो चीज़ रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ. मेरा गला कम्प्लीटली बंद हो चुका है और मैं आपको एक बिग न्यूज़ दूंगा कि अनीता विल बी फाइटिंग इन ONE Lumpinee ऑन October 27th इंशाल्लाह, विच इज़ इन 3.5 weeks. तो बल्कि 4 हफ्ते हैं. तो 4 हफ्ते बाद अनीता फ़ाइट करेगी ONE Lumpinee में. पाकिस्तान की पहली और वाहिद प्रो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट विल बी फाइटिंग इन ONE Lumpinee. एंड अब सबसे दुआ की अपील है कि उनको घुटना थोड़ा ख़राब है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उनकी जो है ना सेहतयाबी के लिए और अच्छी सेहत के लिए दुआ करें. एंड आप अब गला भी कह रहा है कि बस कर दो, बहुत बोल लिया है. तो ख़वातीन व हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने सुना. अगर नहीं सुना तो आपका भी शुक्रिया, और जो सुनेंगे आपका भी शुक्रिया, और जो नहीं सुनेंगे आपका भी शुक्रिया. बेसिकली आप जो भी हैं दुनिया भर में, आप जितने लोग हैं, आप सबका शुक्रिया. A big thanks to all my subscribers. I have over 4,000 subscribers. People from Nepal, people from India, people from Pakistan watch me. Thank you so much to my Southeast Asian brothers and sisters for supporting me, for listening to me, for watching me, for making me feel heard. And if you want me to talk about anything, once again, mention in the comments. I have a comment. I will read that, and let's see when we are going to sign out. The approach to bring everyone together is ultimately wisest of the fighter. Props to you and good luck. Allah kamyab kare. Thank you so much, Adan. Thank you so much. This is the only thing that we can do. I am a fighter and I don't want any fighter to suffer. I have suffered. I have risen out of it. I pulled myself out of it. I was in a very dark place. I don't want any other fighter to be in that dark place, because all of our fighters come from middle class, lower middle class families who cannot who cannot afford to have a good lifestyle, like a very, very lavish lifestyle. So I want all these people to make money. I want all these people to progress, to be famous, to get endorsements from different brands, and make money. Just make money, because at the end of the day, they want to support their family. They want to do big things for their family. They want to feed their family. They want to put food on the table for their families. I want them to food so much table for their on the table for their families, that they get to share it with their neighbors also. They get to share it with every single person in their street, in their colony, and in their village. And this is my goal. This is exactly why I'm doing what I'm doing. And inshallah, bigger things will be happening. I am planning on doing something more, but I can't talk about it right now, because वो कहते हैं ना, बोलते हैं तो नहीं होता है. तो I will let my actions do the talking. और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और सवाल है तो आपके पास
गिनती के बल्कि इससे पहले मैं एक और बात करूँगा जो मैं साथ काम करने की बात कर रहा हूँ NFT और पाक में मैं दोनों फेडरेशंस की, बाबर भाई और उमर भाई की जो है ना काम करने की मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर भाई का भी मेरे ख्याल से इवेंट होने वाला है और साथ ही IMF का इवेंट होने वाला है, कोई एमेचर वो होने वाला है। तो आई वुड से कि अगर ये लोग साथ काम करते हैं तो ये हो सकता है कि अर्लियर ईयर या मिड ऑफ द ईयर आपका NFT होता है। उसके अलावा जितने भी एमेचर टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर आपके टॉप के जो लड़के हैं NFT के अंदर जो फाइनलिस्ट समझे एक तरह से, किसी को आप IMF भेजते हैं, किसी को आप किसी दूसरे उसमें भेजते हैं, कंपटीशन में भेजते हैं, साउथ एशियन जो है ना चैम्पियनशिप में भेजते हैं, गामा के किसी में भेजते हैं, लेफ्ट राइट किसी न किसी उसमें जो है ना आप भेजते जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, हमारे फाइटर्स एक्टिव रहेंगे। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है और मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बड़ी प्रमोशन में लड़ने के लिए, राइट। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जब तक कि मैं फैन का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया था। मुझे मतलब मैं इस प्रमोशन में प्लीज़ लड़वाएं, इस प्रमोशन में प्लीज़ लड़वाएं, प्लीज़ आप मुझे रख लें, ये मसले थे। लेकिन एक दफ़ा जब मेरे पास MFN का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, MFN का बेल्ट आ गया, उसके बाद हर किसी ने अप्रोच करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलने का मकसद ये है कि मुझे 32 साल की उम्र में अगर ये चांस मिला है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोग हैं जो 25-26 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। 7-8 साल के अंदर अंदर लोग स्पोर्ट्स स्टार्ट करके वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हैं। हमारे पास भी वो उस कैलिबर का टैलेंट है। द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज़ कि इन टैलेंट को अच्छी जगह सही से खपाएं, जिस तरह से आप कर रहे हैं मिल के वही काम करें। अपने इवेंट्स को एक कैलेंडर के लिहाज से चलाएँ, टाइमली चलाएँ, ठीक है। उसका टाइम का ख्याल रखें और उसका मंथ डे जो भी है उसका भी ख्याल रखें, ताकि आपका अपना इवेंट भी चलता रहे, साथ साथ IFT आपने जब मर्ज़ी करना है आप करें। NFT और IFT की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट प्रमोशन इन पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक है। हमारे पास ARY वॉरियर्स भी है, हमारे पास फ्लॉगर सीरीज़ भी है, हमारे पास अभी रियल वर्ल्ड भी है। अगर एमेचर एथलीट्स कहते हैं हमारे पास लड़ने के लिए इवेंट नहीं है, भाई आप लोग रियल वर्ल्ड में कम्पीट करो, ठीक है। आप लोग थर्ड वर्ल्ड लीग उसके नाम से आप जानते हो उसको, उसमें कम्पीट करो, एक्टिव रहोगे। अभी वाइकिंग्स चैम्पियनशिप हो रहा है, उसमें आप लड़ो, उसमें आप एक्टिव रहोगे। ढेरों जो है ना इस तरह के प्रमोशन से एक्टिव रहें ताकि आप NFT के लिए तैयार हो। NFT में तैयार होने के बाद अगर आप प्रो हैं तो IFT या ARY वॉरियर्स के लिए तैयार हों। नहीं, अगर आप एमेचर हैं तो आप NFT के लिए जो ना प्रिपरेशन के बाद अपने IMMAF के लिए या डिफरेंट यूरोपियन चैम्पियनशिप्स हो गए या साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स हो गए या गामा हो गया या कोई ना कोई इस तरह की चैम्पियंस होती है, इनके लिए आप रेडी हो जाएं ताकि आप इनमें मेडल्स मारेंगे, इनमें मेडल स्कोर करेंगे, रैंकिंग्स आपकी हाई होंगी। तो जो भी अच्छी प्रमोशन में आप लड़ना चाहेंगे वो आपको अच्छे पैसे दे के फाइट्स देंगे। एक और हमारा कमेंट आया, मैं वो पढ़ता हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल बैकअप का जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा। फाइनेंशियल बैकअप का सवाल आया है, मेरा अपना टीममेट है तो मैं उनको ये बात बताऊंगा कि फाइनेंशियली किसी के पास स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होता है। फाइनेंशियल बैकअप आपको खुद बनाना पड़ेगा। मतलब घर वाले आपको पैसे क्यों दें? आपका शौक़ है फाइटर बनना, घर वाले आपको बोलते हैं पढ़ाई करो हम फीस देंगे, ठीक है, बिल्कुल। घर वाले कहते हैं तुम साइंस पढ़ो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपका खर्चा देंगे, फ़ीस देंगे, खाने पीने का देंगे, हॉस्टल के पैसे देंगे, दूसरे शहर भेजेंगे, आपको कर्जा करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे। लेकिन आपने करना है फाइटर बनना है जो कि आपका शौक़ है, तो उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप कहाँ से आएगा? आपका शौक़ है तो आपने अगर शौक़ पाला है तो इस शौक़ को भी आपने ही पालना है, इसके पैसे भी आपने ही कमाने हैं। काम करें, वेटर बने, क्या नाम है, टेबल साफ़ करें, आप चपली कबाब बनाएं, आप जाए पेट्रोल पंप पे काम करें, आप कहीं पे ट्रेनर लग जाएं, आपने जो मर्ज़ी करना है भाई करो, कॉल सेंटर में जॉब करो, जो मर्ज़ी करना है करो, पैसे आपने कमाने हैं। क्यों? शौक़ आपका है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करेगी आपको? जब आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो सिर्फ आपको कॉलेज देती है, यूनिवर्सिटी देती है, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि यहाँ पे आके जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो प्लेटफॉर्म आपके पास NFT, IFT, ARY वॉरियर्स, अच्छा सराय फाइट नाइट, पाक फाइट क्लब, फाइटिंग अलायंस, फ्लॉगर सीरीज़, लायंस फाइटिंग चैम्पियनशिप, ढेर लगे हुए हैं भाई, ढेर लगे हुए हैं। ये आपको प्लेटफॉर्म मिले हैं, ठीक है। आप प्लेट में बस आपको मिले, हमें ये चाहिए होता है प्लेट में मिले, चम्मच भी जो है ना वो करके कोई हमारे मुँह में डाले, हमारा काम चबाना हो।
या तो इस तरह चिड़िया को उनकी माँ करती है, वही बेबीज़ होते हैं वो अंदर वो घोंसले में बैठे होते हैं, उनकी माँ आती है चबा के कीड़ा उनके मुंह में डालती है, उनका काम से। हम वो नहीं हैं, हम इंसान हैं और हम वो कहते हैं ना मर्द बनो। जब मर्द बनने की बात करते हो भाई मैं तो ये हूँ, इतना हमारा एटीट्यूड होता है कि हम मर्द हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, एंड में आके हम इन मामले में फुस हो जाते हैं। भाई क्यों? अगर आपने एक शौक़ पाला है तो उस शौक़ को आप ही पालोगे, उस शौक़ के पैसे भी आप ही भरोगे, उस शौक़ के लिए आपने ख़ुद काम करना है। यू हैव टू पुट फूड इन योर बेली। आप खुद अपना रेंट भरोगे, आप सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी जगह है जो आपको नौकरी नहीं देती? कहीं आपको वेटर लगना है, लग जाओ, ठीक है, क्या बुरा है इसमें? स्किल सीखो, दूसरों को सिखाओ, ट्रेनर लग जाओ, पैसे कमाओ। पूरी दुनिया ये कर रही है। जब पूरी दुनिया एक चीज़ में, एक काम में आर महसूस नहीं करती है, तो हमारे पाकिस्तानी एथलीट क्यों कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है? दुनिया में कहीं ऐसा, मैक्सिको की टीम IMMAF के अंदर जब मैं गया था, IMMAF के लिए मैक्सिको की टीम के लोगों ने बोला फेडरेशन के पैसे वैसे नहीं हैं, हमने अपने, किसी ने अपना जेवरात बेचे हैं, किसी ने गाड़ी बेची है, किसी ने क्या बेचा है, कहते हैं हमने सब कुछ घर बार बेच बाज के पैसे जमा करके हम IMMAF लड़ने आए। ओ भाई, एक इवेंट लड़ने के लिए गाड़ियाँ घर शहर बेच के लोग आए हैं, तो हम लोग एक नौकरी नहीं कर सकते अपने शौक़ के पीछे? कमाल करते हैं हम लोग। दिस इज़ वेरी गुड फॉर शॉर्ट्स, इसको मैं शॉर्ट्स बना के भेजूँगा। एज ए यूट्यूब शॉर्ट में इसको अपलोड करूँगा, कहने का मतलब ये है। खैर, यहाँ हो चुके हैं 11:24। हमारे क्या नाम है, टीम में कल हमारा रेसलिंग डे है और होपफुली कल हमारा कुछ सेलिब्रेशन शायद होगा, क्योंकि हमारे जो फाइटर्स जीते हैं, स्मिला और स्टैम्प जो बेल्ट्स जीते हैं, उनके लिए वी विल हैव अ सेलिब्रेशन। सो आई एम hoping that we will have a good day tomorrow. I will keep you guys probably updated. But once again, I will be interviewing all these people from these federations, especially Abid Jahangir Bhai, number 2, Umar Ahmed Bhai, and number 3, Babar Raja Bhai. Excuse me. I'll talk to them and I will let them know that I'm going to interview them and I will speak to them about this issue. Whatever they have to say, I will record this and then I will post it so you guys can watch it. आप कोशिश अपनी तरफ से, दोबारा से एक दफ़ा फिर बोलूँगा, कोशिश ये करें कि आपकी तरफ से जितना मुमकिन कंट्रीब्यूशन हो सकती है, चाहे वो वर्बली हो, फिज़िकली हो, किसी भी तरह से हो, कि अगर एट द एंड ऑफ इट अगर हम ये बोलें कि यार भाई आपने उठ के खड़े होना है इस टॉपिक के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आप उस टॉपिक के लिए खड़े हो सकते हैं और उस टॉपिक से आपका फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ उस बात पे खड़े हैं, हमारा साथ दें, ताकि हमारी जो कम्युनिटी ग्रो करी है ये अच्छी तरीके से ग्रो करे। जो फाइनेंशियल इश्यूज़ वाली जो बात है ये भी उस चीज़ में कवर हो जाती है, क्योंकि जो डिफरेंट कैंप्स होते हैं इस तरह के, इनमें पैसे दिए जाते हैं एथलीट्स को। इनमें जो उमर भाई हैं, आई हैव सीन हिम, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने एथलीट्स को पे भी किया है, उनका रहाइश, उनका खाना पीना, उनकी ट्रेनिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है। जहाँ पे स्पॉन्सर्स ना भी मिले वहाँ पे उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा के इन एथलीट्स को भेजा है। तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट। बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटा तकरीबन हो गया इस लाइव सेशन को। अगर आपके वंस अगेन कोई और क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। And with all this being said, ladies and gentlemen, please make sure like, share, comment, subscribe, etc., all this good stuff. And at the end of it, Kratos out and Pakistan Zindabad.